Hello my lovely people, कैसे हो आप सब? Hope you all are doing good. Welcome to the YouTube channel of Delancey. Make sure you hit that subscribe button and press that bell icon so you'll be notified every time we post a new video. If you guys don't know me, hi, my name is Alifya and I'm a professionally certified makeup artist और आज मैं हूँ आपके Delancey Makeup Academy Chapter 1 की teacher. So are you guys excited? Let's get started. Well, makeup तो सब लगाते हैं, लेकिन makeup होता क्या है? What is makeup? Well, सबके अलग-अलग definition है makeup को लेके, but to make it simple, makeup means to enhance one's beauty that already exists. For me, makeup means confidence. It gives me a power to stand out. Comment down below what does makeup mean for you guys. तो सबसे पहले आते हैं makeup tools, जिससे हम makeup लगाते हैं, which are sponges and brushes. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें makeup लगाने में help करता है for a flawless look. वैसे देखा जाए तो हमारे पास भी एक inbuilt tool है, fingers. अब आता है प्राइमर. ये आपके स्किन और मेकअप के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है एंड आल्सो इट हेल्प्स इन फिलिंग द पोर्स एंड मेक्स योर स्किन स्मूथ फॉर द फर्दर प्रोसेस. उसके बाद फाउंडेशन, व्हिच इज द एंटायर बेस ऑफ अ मेकअप लुक. फाउंडेशन हमें हमेशा अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए. देन कंसीलर, हमारे फेस के सारे दाग छुपाने के लिए. काश जिंदगी के लिए भी कंसीलर होता. एनीवेज, फिर आता है ट्रांसलूसेंट पाउडर. ये आपके फेस को लॉक करता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. उसके बाद आता है ब्लश ऑन. We apply it to the cheek area of a face to even out the skin tone or to add more color. And then to shine bright like a diamond, we apply highlighter. अब सबसे interesting and most loving product, which is eyeshadow palette. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में सबको पता ही होगा. It will add colors to your eyes and your life as well. फिर आते हैं eyeliner, mascara and kajal. ये तीनों प्रोडक्ट्स आपके आई मेकअप को कंप्लीट करते हैं. अब सबकी चाहती लिपस्टिक. हम बड़े ही मम्मी की लिपस्टिक लगाकर हुए हैं. 70% गर्ल्स की बैग में कुछ और मिले या ना मिले, लिपस्टिक जरूर मिलेगी. अगर अब मेरी बात करो तो मेरी बैग में आपको एक नहीं 3 अलग अलग शेड्स की लिपस्टिक्स मिलेंगे एंड लिप ग्लॉस एज वेल. एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेकअप सेटिंग स्प्रे. इट विल हेल्प टू मेक योर मेकअप स्टे लॉन्गर. ये सारे बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो स्टार्ट के लिए काफी है. So now I'm gonna teach you guys how I created this beginner's makeup look. So without wasting any further time, let's get started. So as you guys can see, I have already prepped my skin and I'm gonna start off by applying primer. Guys, makeup से पहले primer लगाना कभी मत भूलना. It's very important. I'm going to apply primer on my nose and on my cheeks. Now I'm just going to massage it into my skin. प्राइमर के बाद आता है फाउंडेशन. हमें फाउंडेशन कैसे लगाना है? सो स्टार्ट ऑफ बाय टैपिंग स्मॉल डॉट्स ऑफ फाउंडेशन ऑल ओवर ऑन योर फेस. डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर नेक एज वेल. अगर आपको स्किन लाइक लुक चाहिए देन यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस ऑल आउट, बट इफ यू वांट अ लिटिल बिट मोर कवरेज यूज अ फाउंडेशन ब्रश टू ब्लेंड दिस. So now I'm going to start off by blending my foundation from the center of my face to the outer edges, including my hairline and my jawline. फाउंडेशन के बाद आता है कंसीलर एंड आई एम गोना बी यूजिंग अ लाइटर शेड ऑफ कंसीलर फॉर इल्यूमिनेटिंग पर्पस. हमें कंसीलर कहाँ लगाना चाहिए? सो हियर इज द राइट वे. अप्लाई इट अंडर योर आईज, a little bit on your forehead, and अब मैं वही सेम फाउंडेशन ब्रश यूज करने वाली हूँ टू ब्लेंड दिस ऑल आउट. सो हियर्स अ टिप फॉर यू गाइस. अगर आपके अंडर आई में बहुत क्रीज हो जाती है ना, तो सबसे पहले आप अपने फोरहेड और नोज पे जो कंसीलर है ना वो ब्लेंड करना और अपने आईज का कंसीलर लास्ट में ब्लेंड करना. Everything is blended and अब बारी है हमारे बेस को लॉक और लॉन्ग लास्टिंग बनाने की. इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर. सो गाइस, अगर आपके अंडर आईज में बार बार क्रीज हो जाती है ना, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना ब्रश लेना है, उसे अच्छे से ब्लेंड करना है एंड तुरंत ही पाउडर से सेट कर देना है.
So as you guys can see, my base is all long and it's looking a little bit pale. So अब बारी है इस बेजान चेहरे में कुछ जान डालने की. So now it's time for blush on. So for blush on, I'm gonna be using this Queen Illuminator Blush On palette by Delancey. You guys, this palette is so beautiful. I mean, just look. I'm applying blush on the apple of my cheeks in circular motion. I'm even gonna apply the blush on a little bit on my nose and on my chin for that sun-kissed effect. बहुत से लोग confused है कि हमें highlighter कहाँ place करना चाहिए. So here is where you should place your highlighter. Starting from your nose till the end of your eyebrows, this is where you should place your highlighter. Just look at that shine. I'm obsessed. So now it's time to add some colors to our eyes. You guys, look at this. This is so freaking amazing. These colors, oh my god. So guys, जब हम बेसिक आई मेकअप करते हैं ना, तब हमें एक बात हमारे ध्यान में रखनी है कि हमें हमारे क्रीज पे हमेशा एक आई शेडो का लाइटर शेड ही लगाना है और आउटर कॉर्नर पे डार्कर शेड. So I'm gonna be using this shade Blessing on my crease. I'm using a fluffy brush and I'm just going to place the color on my crease. And then I'm gonna blend it in circular motion. So now it's time to add some definition to our eyes. So I'm gonna be using a darker shade of eyeshadow on my outer corners. So now I'm gonna be using the shade Wing for my outer corners. So you guys can leave this over here, but I want to add a little bit more darker shade to my outer corners. So I'm gonna be using this shade Symbol on my outer corners. Now I'm gonna use the same shade Blessing and I'm gonna apply it under my eyes. So now I'm going to use this shade Fireworks in the inner corners of my eyes. So here's the eye makeup look. If you guys want, आप इसको mascara लगा के इधर ही complete कर सकते हो. But I'm gonna go and apply a wing eyeliner. So here's the wing eyeliner and now it's time for some mascara. So guys, अब बारी है उस मेकअप की जो इस मेकओवर में 4 चांद लगा देगा. Yes, it's time for some lipstick. So for lipstick, I'm gonna be using this multi-shade lip palette by Delancey. So this is what the palette looks like. So for my lipstick shade, I'm gonna be mixing these 2 shades right here. It's time for some setting spray. So you guys, here's the final look. I hope this tutorial was helpful for you guys and you guys enjoyed it as well. Do let me know in the comment section down below what do you think of this makeup look, and also do not forget to like, share, comment and subscribe to this YouTube channel, and I'll see you next time. Bye!